Sat Sri Akal, Namaskar, Adab. Good morning friends. This is my 78th video in continuation to the rumors and the mongerings happening in the air these days. So now we will move a little forward that okay fine, we will only talk of the civil area now. Let's say there is a civil area which is getting excised, or will it not? That's a separate issue. But let's presume under the rule 2 of CLA 1937, there was a civil area where old grants, leases in these various 4 bazaars of every cantonment called Sadar Bazaar, British Infantry Bazaar, Royal Infantry Bazaar and Royal Horse Artillery Bazaar. So these were the 4 major regiments of the army which the British had, and these are the 4 bazaars maybe added on. So let's say this is moving out. So if this is moving out, what is the need of making CLA rules 2020? What is the need of amending the Cantonment Act 2020? So we leave it that side. So we will talk, there is a civil area which is getting excised. Now in this civil area you will have OGBs moving, you will have leasehold properties. Now OGB could be an old grant, a hatta, a complete hatta like we have in Ambala. So once you move out under this meeting which was held on 16th November 2021 by the Raksha Mantri in Parliament, in the South Block. So there's a very clear instruction if you read that letter, which has been generally floating in the WhatsApp groups of various cantonments which hold on to me. He's very simply said the 1955 Agra Excision and the 1977 Ambala Excision. Now SK Patil and Mr. MEHTHA committee report connived together, got an excision in Agra. Dave report got it in Ambala. You know, it's very important at this stage. Agra people can talk to the people living in this excised area, because I know one person whose case I've been dealing with. You'll be surprised, in the 1955 notification, land was never transferred to the civil municipality. The land records are still being maintained by DO Agra. NOC has to be given by the DO Agra. For any approvals, mutations and admission deed is taken. Has anything changed in Ambala? A little further. Ambala land records also got transferred, but there was an agreement of February 1977. So Ambala, everybody, if I have a property or let's say somebody else has a property in Ambala, either it is on lease or it is on OGB, it cannot be sold without an NOC or without an admission deed given under GGO 179, cannot be mutated. So what did we excise? Please understand that. I don't want those nitty-gritty problems which these 2 cantonment bungalow owners or residents faced in civil area should be repeated in 2022, when 57 cantonments, or 55 to be more precise, would be excised. So who will give these inputs? So we need to get together. The local authorities can tell us. Army is there, local military, LMA, army or the station commander. MLAs are there, MPs of those cantonments are there. You have DOs and COs there. We can contact our neighbor of the bazaar area, bring them on a table, because till we do not make a mass movement. So now civil area people can get united, because they feel somewhere bungalow areas and the civil area people are 2 separate identities. No, I have always been saying they are one. Because nowhere does our land record speaks different. It only says we are managed by the DO, you are managed by the CO. That's the only difference. You also give an admission deed, you are also GGO 179 applicable, and many other cantonment regulations are applicable. So we need to quickly get to the board members. In past, there are senior retired board members living in cantonments. They have a lot of knowledge. Get to talk to them. There are some who may not have bigger knowledges but are board members and have been active. Bring them together and let's highlight these 2 cantonments which have been excised to them.
and then we move forward. So we need to understand this time. And I'm being very honest, this video is specifically for civil area people who actually are, I'm sorry, they actually envy the bungalow areas and the bungalow owners actually envy them. So we have a little divide somewhere. No, we should not be having. I must read you now, what does the Cantonment Act, whether 1924 or 2006, definition of cantonment speaks. The central government may by notification in an official gazette declare any place or places along with boundaries in which any part of the forces is quartered or which being in the vicinity of any such place or places is or are required for the services of such forces to be a cantonment for the purpose of this act and of all other enactments for the time being in force may by a like notification declare that any cantonment shall cease to be a cantonment. So in one breath it says we take, in one breath it says we can even seize. How many of us, be very honest, would understand the real meaning of this definition called cantonment? I would simply say you, just ask yourself, does it say we are a military cantonment? Or does it say we are a civil cantonment? Under section 3, we were brought under the cantonment, but were governed by the Civil Act, that is the Cantonment Act. We are not being governed by the Military Act of 1955 or the Britishers 1855 or the 1950 India Act. All we were brought under these boundaries. So please go to your DOs, go to your COs, ask them when was your cantonment boundary pillars made for the first time. Please don't harp on. There are many Sandys and Paddies living in these cantonments who are so eccentric. So we need to grow up from these Sandys and Paddies and we need to move forward. So please understand, the first Civil Cantonment Act was given to us in 1864. So we need to wake up, ask the Raksha Mantri, ask the local staff, what does under section 4 of the Cantonment Act says? It says alteration of limits of cantonments. The central government may, after consulting the state government and the board concerned, by notification in the official gazette, declare its intention to include within the cantonment any local area situated in the vicinity thereof or to exclude, मतलब बाहर निकाल देना, from the cantonment any area comprised therein. So anything can be taken, anything can be given back. So once it is released from the cantonment boundary pillars, why does that dagger hangs on our head? वो छुरी हमारे सर पे क्यों लटकती रहती है कि लोकल एरिया में हम चले भी गए, अंबाला सदर म्यूनिसिपैलिटी और आगरा म्यूनिसिपैलिटी में हम चले गए, बट उसके बावजूद भी जीजीओ लागू रहा, उसके बाद भी आर्मी रेगुलेशंस लागू रही. Am I making sense to most of you? भैया सिविल एरिया वाले लोग इकट्ठे हो जाओ, मेरा नंबर इस YouTube के नीचे चल रहा है, मेरे से बात करो और अपने आप को अनजान और अनपढ़ की तरह मत दिखाओ, वरना ये 1955 और 77 वाला जो एक्सिशन सर्टिफिकेट था ये हमारे पे लाद दिया जाएगा. सिर्फ कहानी ये होगी कि वी विल फॉल फ्रॉम वन सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेम रेगुलेशंस. सो हमें अपना एक्सेशन को इन सेक्शन 3 और 4 के नीचे मांगना है. ये जो रिपोर्ट्स बनी थी एसके पाटिल की 1955 में, मेहता कमेटी रिपोर्ट 1955 की और डावे रिपोर्ट 1977, इसको पढ़ो भैया, प्लीज रीड इट. टॉक टू द पीपल हु हैव शिफ्टेड इन आगरा और अंबाला इफ यू हैव एनी कॉन्टैक्ट्स. मुझे पता है, आई नो इफ माई प्रॉपर्टी वॉज इन अंबाला सिविल एरिया
एडमिशन डीड देने के बाद ही मेरी म्यूटेशन होगी, और उसमें भी लिखवाया जाएगा आई एम अ ग्रांट गिवन अंडर GGO 179। भैया रेगुलेशन तो मेरे पे खत्म हो गई जब मैं एक्साइज हो गया। फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप 1977 का एग्रीमेंट पढ़ेंगे अंबाला के लिए, उसमें यहां तक लिखा गया कि लैंड इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्री, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट उस लैंड पे कुछ कमाएगी, वेदर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, रेवेन्यू, सेल प्रोसीड, उसका 50% जो इनकम जनरेट होगी वो MOD को जाएगी। अभी हमारे यहां पे एक प्रपोजल चली थी, विच आई विल नॉट गेट इन लेंथ, कि जी सिविल एरिया को फ्री होल्ड कर दो बट कलेक्टर रेट ले लो, सबसे जो 30-40 साल से बैठा उससे मिनिमम 50% ले लो कलेक्टर रेट। एक एक प्रॉपर्टी का 1.5-2 करोड़ रुपया बन रहा है, जिसमें आप 100 साल से बैठे हो। अभी एक प्रपोजल बनी है हमारी अंबाला कंटोनमेंट में, अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ रुपए से कुछ सिविल एरिया रह गया था 1977 में, अब वो स्टेट गवर्नमेंट MOD से खरीद रही है। अब बताइए, एनीथिंग बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू द अदर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसमें भी पैसे दिए जा रहे। बिकॉज क्यों? अब वो 80 करोड़ दे के वो कहेगी अब हम आपके मालिक हैं। तो आप मालिक तो नहीं बने एक्सिशन के बाद भी, तो भैया प्लीज, आपका स्टेटस फिर वहीं खड़ा रह गया एक्साइज होने के बाद। आपकी प्रॉपर्टी अगर लीज बोल रही है तो लीज होगी, अगर उसमें ओल्ड ग्रांट लिखा है तो वो ओल्ड ग्रांट होगी। बस सिर्फ फर्क ये होगा जो मैंने आपको पहले बोला, अब स्टेट गवर्नमेंट आप पे टैक्सेस लगाएगी, अपने लॉज लगाएगी। क्या वो आपको डिवीजन की परमिशन देगी? क्या उसके बाद वो, दीज आर सो मेनी क्वेश्चन, आपको नक्शा बनाने देगी, आपको बिल्डिंग का FAR बढ़ाने देगी, क्या वो उसी रिजीम में चली जाएगी? तो इन चीजों को, मतलब डोंट बी फुलिश, डोंट जस्ट गेट वेरी हैप्पी अबाउट इट कि जी सिविल एरिया जा रहा है, सिविल एरिया जा रहा है, तो जी वीव गॉट अ लॉलीपॉप इन अ हैंड। भैया लॉलीपॉप एक ही तरफ से चूसी जाती है, दूसरी तरफ डंडी होती है उसके। सो वी डोंट नीड टू गेट फूल्ड। मैं अब आपको ना सेक्शन 5 पढ़ता हूं इसी कंटोनमेंट एक्ट का 1924 और 2006 का, द इफेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग एरिया इन कंटोनमेंट, कि जब लिया जाता है तो क्या इफेक्ट होता है। When by a notification under section 4 any local area is included in a cantonment, such area shall thereupon become subject to the act कौन सा? Cantonment Act, and to all other enactments for the time being in force throughout the cantonment, and to all notifications, rules, regulations, bylaws, orders and directions issued और मेड देयर अंडर। सो रेगुलेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना, वही GGO गवर्नर जनरल रेगुलेशंस। ये था जब हम अंदर आ रहे थे। 4 क्या बोल रहा था सेक्शन? जब हम बाहर जा रहे हैं। तो जब हम बाहर जा रहे हैं तो ये तो कोई लागू होनी नहीं चाहिए हम पे, तो फिर भी लागू होते हैं। सो भैया प्लीज समझ लो इस बात को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटोनमेंट बाउंड्री पिलर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, how alone we can save ourselves. Please, मैं फिर दोबारा बोलता हूं, I remember those Sandys and Paddies and Mr. Agarwal's, how they are so to themselves. They may even today after this video would speak against me. They will say, Ronnie ji, what are you doing? He's gone mad since 2003. Why am I mad is because I'm educated. Whether we are on this side or whether we are on that side, I know old grant, we are freehold. So I am not worried. Let's be very honest. Now when we are a lease, why were we made a lease? My question is this. So I am neither mad. I only want, let us sit on a table and negotiate with the government. Give us something which we already have. You are trying to give us something which we did not have, on a presumption. So we have our rights. So if we have to be taken this side or that side, not a single land was belonging to the British Army. Neither did it transfer this land to the Indian Army or to the government of India. 1925 के बाद एडमिशन डीड्स आई,
उससे पहले भी ये हमारी कुछ सेल डीड्स में लिखवाने लग गए थे। 1915 की, 1912 की मैंने कुछ सेल डीड्स देखी। सो वी नीड टू एड्रेस दिस वर्ड ओल्ड ग्रांट ऑल्सो। सो हाउ डू वी डू दिस? वी कैन ओनली डू दिस अगर वो सिविल एरिया वाले लोग, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मेरी यूट्यूब देखो और अपनी ग्रांट्स को और अपनी लीज होल्ड राइट्स को समझो। फॉर हेवन सेक मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आप लोग फ्री होल्ड थे, आप समझे, आपको कंटोनमेंट के अंदर डाल लिया गया लोकल एरिया को। अब आपको 2022 में गवर्नमेंट कह रही है अब हमें जरूरत नहीं है आपकी, तो अब आप बाहर निकल जाओ। तो किस सेक्शन में निकल जाओ? बड़ा क्लियर है, सेक्शन 4 में निकल जाओ। सो पिक अप योर लैंड डाटास, गेट योर CODOs। 25 से 30% सिर्फ लैंड होल्डिंग बनते हो आप सिविल एरिया वाले। इस रिप्रेजेंटेशंस को प्लीज सब लोग अपने हाथ मिलाओ। फॉर गॉड सेक, कॉल योर नेबर, डू नॉट ट्राई एंड प्रूव आई एम बिग और ही स्मॉल, आई हैव एन ईगो, ही मतलब लेट्स फिनिश ऑफ दिस। हमारे ना ये कंटोनमेंट्स के अंदर एक चीज तो बड़ी सही है, अंग्रेज भर गए हमारे खून में ना, वो डिवाइड एंड रूल तो बिल्कुल डाल गए, हम एक दूसरे के साथ खड़े ही नहीं हो पाते। सो इस सारी चीजों को देखते हुए हमें 233 के नीचे अपना सिविल एरिया का प्लान बनवाना है नया, और उसके बाद एक्सिशन सर्टिफिकेट के अंदर एज पर सेक्शन 3 and 4 and 5 अपना एक्सिशन कराना है। नॉट अदरवाइज, अगर हम उसके अलावा हो जाते हैं तो हमें दिक्कत आएगी। ये लड़ाई या ये जो होने जा रहा है, जो रक्षा मंत्री ने नवंबर में नीचे डिपार्टमेंटल लोकल कंटोनमेंट बोर्ड से मांगा है और स्टेशन सेल से, इसको जल्दी से करिए। वी नीड टू डू इट ऑन अ वॉर फुटिंग। अगर हम नहीं कर पाएंगे हम सोचते ही रह जाएंगे, हम गुड न्यूज़ व्हाट्सएप करते रहेंगे, पेपर कटिंग्स व्हाट्सएप करते रहेंगे, कोई मिस्टर सुरनीज आएंगे और वो अपनी एक प्रेस कटिंग्स देंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज दे ऑल टॉक ऑन हाँ यस ओके गवर्नमेंट इज थिंकिंग, वी आर वेरी ग्रेटफुल, प्लीज टॉक टू देम अंडर द लॉ, हाउ एंड व्हाई आर दे डूइंग दिस। सो प्लीज ये 5 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, उस दौरान में हमें इन चीजों को तैयार करना है। सो टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। गेट इन टच विद मी फिजिकली इफ यू वांट, योर माय मोबाइल नंबर्स आर मूविंग डाउन द वीडियो, टॉक टू मी। एंड मैं तो अभी सबको एक बात बोल रहा हूं कि आई एम रेडी टू ट्रैवल टू एवरी कंटोनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रोवाइडेड यू बंगलो ओनर्स या रेजिडेंट जो सिविल एरिया के वो इकट्ठे हो जाएं। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनी ऑफ माई डेली एक्सपेंसेस, आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड हाउ वी विल प्लान ऑल दिस। सो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक यूट्यूब चैनल है कंटोनमेंट लॉज, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परिवार के, अपने सब दोस्तों को जो कंटोनमेंट में रहते हैं, चाहे वो सिविल एरिया में हो, बंगलो एरिया में हो, उनको सब्सक्राइब कराना है देखने के अलावा। मुझे 1000 लोगों की सब्सक्रिप्शन चाहिए, बिकॉज यूट्यूब अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे एडवर्टाइजमेंट देने लगी है। वंस अगेन आई एम सेइंग वी आर एन ओल्ड ग्रांट because we were revenue free grants, never converted by the Britishers in new grants of 1765, either in 1790, 1812, 1828 or last by 1859 by a regulation. So मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को समझो। धन्यवाद।